example number 4 we are going to discuss, right? On a one page of telephone directory, there were 200 telephone numbers. Frequency distribution of their unit digit is given in the table, right? Here, that is example number 4, and one table is given, that is digit and frequency. What? Digit, and here it is frequency, right? Digit will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. 22, 26, 22, 22, 20, 10, 40, 28, 60, and 20, right? So 22, 26, 22, 20, 10, 40, 28. Now, without looking at the page, pencil is placed on one of these numbers. That means number is chosen at a random. What is the probability that digit in its unit place is 6? That means now in telephone directory there were on one page, like this will be the page, and there are 200 numbers will be there, right? And unit digit of 200 number is given. So there are 200 number is there, like one number is like this 9824774187, right? उसका लास्ट डिजिट यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये पहला नंबर का लास्ट डिजिट 7 आया, तो 7 लास्ट 200 में से जिसका भी यूनिट डिजिट 7 आता है उसमें नंबर 200 में से कितने हैं 22. 0 लास्ट डिजिट 0 है, वैसे नंबर 200 में से कितने हैं उस पेज पे 22, 3 वाले भी 22, 4 वाले भी कितने 20, 5 वाले भी कितने, मतलब पूरे पेज में 200 नंबर है, उसमें से लास्ट डिजिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 है उतने नंबर कितने हैं 200 में से 22, 1 है वैसे कितने हैं 26. नाउ we have selected one number at a random and we have to find the probability that digit in its unit place will be 6, right? So digit in its unit place will be 6. That means how many numbers, मतलब कितने नंबर का लास्ट डिजिट 6 है? We can see that 40 number has the last digit 6. So what will be the event date? Selected or chosen number has selected number has 6 at its unit place, right? So we know that the P of A formula, that is P of A will be equal to number of, there are total 200 number, that means total number of trial is equal to 200. So number of trial will be equal to 200, right? P of A, number of trial in which event A happen upon
number of trial, right? This will be number of trial in which event A happen. मतलब लास्ट डिजिट 6 आए, वैसे नंबर 200 में से कितने हैं 40 एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं 200. So answer will be 14 upon 200. Now if you factorize it, 7 twos and 100 twos, so this will be equal to 7 upon 100 and answer will be 0.07. So if you have asked probability that number unit place will be 3, then that probability will be 22 upon 100, 200, because there are 200 number is there and unit digit वाले नंबर कितने हैं 22. 4 वाले कितने होंगे, उसकी probability क्या आएगी 20 upon 200, right? Just like this, right? Now example number 5. Record of weather station show that out of 250 consecutive days its weather forecast were 175 times correct. That means in example number 5, total number of trial will be equal to how much? Total number of trial trials will be equal to 250. Now it is written that weather forecast were correct for 175 days, right? Or 175 times. That means if we give the report of 250 days, only 175 days report are correct, right? So that means weather forecast were correct for 175 times. Right? Now, how many days, that means how many days weather forecast was not correct, right? That means 250, out of 250, 175 is correct. That means weather forecast is not correct on weather forecast were not correct for 250 minus 175, that is equal to 75 times. So weather forecast is not correct for 75 times, right? Now what is the probability that on a given day it was correct? That means event A will be that weather forecast were correct. Weather forecast is correct on given day. Right? That means P of A will be number of trial in which event A happens upon total number of
how many days report were correct? 175 out of 250 days. So number of trial in which event A happened, because correct weather report कितने दिन में है? 175 days में out of 250, right? So probability will be 175 upon 250. Now we can definitely write it is 25 sevens are upon 25 tens are. So this will be equal to 7 upon 10, and that is equal to 0.7, right? Now event B, weather forecast was not correct on a given day, right? So event B, that weather forecast is not correct on given day. So कितने बार ये इनकरेक्ट होगा? 75 days. So P of B will be equal to number of trials in which event B happened upon total number of trials. So this will be 75 upon 75 upon 250. So this will be equal to 325 and 25 tens are. So answer will be 3 upon 10, and that is equal to 0.3. मतलब करेक्ट वाला कितना है? 175 upon 250. तो इनकरेक्ट वाला 75 upon 250, right? Now we are going to solve example number 6. A tire manufacturing company kept a record of distance covered before the tire needed to be replaced, right? मतलब कंपनी ने रिकॉर्ड रखा है कि आपको टायर कितने किलोमीटर के बाद बदलना चाहिए, राइट? टेबल शो द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस. That means table show the cases of 1000. That means total number of trial in this question will be 1000. I will write the table, then we are going to, that will be easy for you. So distance in kilometer, and here it will be for frequency. So tire need to be replaced less than 4000 kilometers. So it will be less than 4000, right? 4000 to 9000, 4000 to 9000. Another one, 9001 to 9001 to 14,000, right? And more than 14,000, more than 14,000, right? So this will be 20, 210, 325, and here it is 445, right? So first question will be, if you buy a tire of this company, what is the probability that it will be need to be replaced before it cover 4000 kilometers, right? So it will be 20 out of how much? 1000, right? ये डेटा दिया गया है, ये
4000 किलोमीटर से पहले हमको टायर रिप्लेस करने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 है। मतलब 1000 केसेस में से 20 टायर ऐसे निकले जिसको 4000 किलोमीटर से पहले ही चेंज करना पड़ा, राइट? नाउ 4000 टू 9000 के बीच में चेंज करने वाले टायर की वैल्यू कितनी है? 210 टायर ऐसे निकलेंगे जिसको 4000 टू 9000 में ही रिप्लेस करना पड़ा, और 9000 टू 14000 में रिप्लेस करना पड़ा है वैसे टायर कितने हैं? 3 to 5। और मोर देन व्हेन इट टायर इज कवर मोर देन 14000 किलोमीटर डिस्टेंस उसको चेंज करना पड़ा, वैसे रिजल्ट कितने हैं? 4, 4, 5, राइट? सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेंट ए टायर नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट कवर 4000 किलोमीटर। मतलब टायर 4000 किलोमीटर से पहले ही चेंज करना पड़ा, तो वैसे रिजल्ट कितने हैं? 20। आउट ऑफ हाउ मेनी केस? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, दिस इज डेटा फॉर 100 रिजल्ट, सॉरी 1000 केसेस। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल is equal to 1000, right? Event tire need to be replaced before it cover 4000. Tire need to be replaced before it cover 4000 किलोमीटर। ऐसे रिजल्ट कितने? ना वी नो दैट द फॉर्मूला P of A will be number of trial in which event A happen upon total number of trial right? Now how many? 20, because 4000 से पहले ही हमको टायर चेंज करना पड़ेगा, वैसे 1000 में से 20 टायर को हमें चेंज करना पड़ा, so this will be 20 upon 1000, right? So this will be 2 get 0 will get cancelled, so answer will be 0.02, right? Now event it will last more than the 9000 किलोमीटर। मतलब टायर को चेंज 9000 किलोमीटर से बाद चेंज करना पड़ा, तो ये भी 9000 से ऊपर है और ये भी 9000 से ऊपर है। मतलब कितने टायर को हमको 9000 के बाद चेंज करना पड़ा? दैट विल बी 325 and 445. So total of this will be 770 टायर को हमें 9000 किलोमीटर के बाद चेंज करना पड़ा। मतलब these two result will be our number of टायर in which event A. मतलब टायर को कितने किलोमीटर के बाद चेंज करना पड़ेगा? 9000। तो हमें 9000 से 40000 वाले भी 9000 से ऊपर में ही आएंगे, और मोर देन 40000 विल बी आल्सो इन, वो भी 9000 से ऊपर में ही आएंगे। मतलब इन दोनों का टोटल विल बी अवर नंबर ऑफ ट्रायल इन विच अवर इवेंट हैपन। मतलब टायर को 9000 किलोमीटर के बाद रिप्लेस करने का, तो ऐसे रिजल्ट दिस प्लस दिस, राइट? सो इवेंट बी टायर need
need to be replaced after how many kilometer? After 9,000 kilometer. So ऐसे रिजल्ट कितने हैं? टोटल 770 out of 2000. So P of B will be number of trial in which event B happen upon total number of trial so ऐसे जिस टायर को 9,000 किलोमीटर के बाद चेंज करना पड़ा, मतलब 325 और 44 इन दोनों को टोटल को हमको 9,000 किलोमीटर के बाद चेंज करना पड़ा. So this will be 770 upon 1,000. So 0 0 will get cancelled. So answer will be 0.77. Now event C. It need to be replaced after it has covered somewhere between 4,000 to 14,000. मतलब उसको चेंज करना पड़ा 4,000 to 14,000 के बीच में, राइट? तो ये दो रिजल्ट का टोटल आएगा, बिकॉज 4,000 to 14,000 के बीच में टायर को रिप्लेस करना पड़ा. वैसे कितने टायर है? 210 plus 325, राइट? सो 210 plus 325 that will be equal to 535. So total 535 रिजल्ट को हम 535 टायर को हमको 4,000 और 14,000 के बीच में रिप्लेस करना पड़ा. सो टायर नीड टू बी रिप्लेस बिटवीन between 4,000 to 14,000 kilometer, right? So P of C will be number of trial in which event C happen. मतलब 4,000 to 14,000 किलोमीटर के बीच में कितने ट्रायल चेंज करने पड़े हमको? आउट ऑफ 1,000 210 प्लस 325 टायर को हमको 4,000 प्लस 4,000 किलोमीटर टू 14,000 किलोमीटर बीच में चेंज करना पड़ा. विच इवेंट सी हैपन अपॉन total number of trial so this will be 535. So 535 upon 1,000, so this will be equal to 0.535. अगर आपको ऐसा पूछा गया होगा टाइम टू बी रिप्लेस बिटवीन 4,000 to 9,000 किलोमीटर, देन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 210 upon 1,000. If it is you have asked time has to be replaced between 9,000 to 14,000, then its probability will be 3 to 5 upon 1,000, right? Okay.